हेलो, गुड इवनिंग सी इंटर एस्पिरेंट्स। सीए इंटर ऑडिट का 2026 का पेपर कहाँ से आएगा? स्टडी मैट होता है एक हमारे पास आईसीआई का। हमारे पास ना जो पेपर प्रीवियस ईयर के हैं, जनवरी अटैम्प्ट हो गया उसका, अपना सितंबर प्रीवियस अटैम्प्ट हो गया, मई अटैम्प्ट हो गया, उनके पेपर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, हर बार के प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे सामने अब एक जनवरी 2026 का पेपर है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2026 का पेपर सीए इंटर ऑडिट का। ठीक है, तो प्लीज़ सीए इंटर ऑडिट के लिए जो भी आप स्टडी मैट पढ़ रहे हो, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो, जब तक आप ये नहीं करोगे पेपर कहाँ से आएगा, ये नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। इसमें है वो सारे टेक्निकल कीवर्ड्स जो हमारे पेपर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं पहले पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, Messr RS and Company has been appointed as the statutory auditor of Blue Sky, a listed company for the financial year 2024-25. CAR is the engagement partner for this assignment. During the audit, the firm decided that an engagement quality control review is required for Blue Sky Limited. What is required? EQCR, Engagement Quality Control Review. CAT, appointed as the Engagement Quality Control Reviewer, raised concern regarding the adequacy of documentation for related party transactions and inventory valuation. ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। Messr RS and Company has been appointed as the statutory auditor of Blue Sky, a listed company for the financial year 24-25. CAR is the engagement partner for this assignment. During the audit, the firm decided that an engagement control quality review is required for Blue Sky Limited. ठीक है, CAT, appointed as the engagement quality control reviewer, raised concern regarding the adequacy of documentation for related party transactions and inventory valuation. However, the management is pressuring CAR to issue the auditor's report before the board meeting, even though the EQCR process is not yet complete. मतलब मैनेजमेंट इज़ प्रेशरिंग CAR कि इशू दी ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर दो बिफोर द बोर्ड मीटिंग, इवन दो द EQCR इज़ नॉट येट कंप्लीट। अभी EQCR क्या है? EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। There is also a disagreement between CAR and CAT regarding the extent of further audit procedures. SA 20, as per SA 20, quality control for an audit of financial statement discuss the responsibilities of CAR against the engagement partner in relation to overall direction and review of the audit and the specific responsibilities relating to the EQCR. ऐसे क्वेश्चन आने हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को? ऐसे क्वेश्चन जिनमें ये टेक्निकलिटीज़ होती है ना, ऐसे क्वेश्चन आने हैं। एज पर ऐसे 20 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CAR एज द एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू ओवरऑल डायरेक्शन रिव्यू ऑफ द ऑडिट एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू EQCR। इसका आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, responsibilities of CAR as the engagement partner in relation to overall direction and review of the audit as per SA 220 quality control for an audit of financial statements। इसमें हमारा ऐसे कौन सा लग रहा है? SA 220 quality control for an audit of financial statements. Engagement partner has a responsibility for direction, supervision and performance of audit engagement in accordance with the responsibilities of CAR as the engagement partner in relation to overall direction and review of the audit as per SA 220 quality control for audit of financial statements. Engagement partner has a responsibility for direction, supervision and performance of audit engagement in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements. He is responsible for auditor's report being appropriate in circumstances. Okay, रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सारी ड्यूटीज़ हैं एंगेजमेंट पार्टनर की। फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CAR एज द एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू ओवरऑल डायरेक्शन एंड रिव्यू ऑफ द ऑडिट एज पर SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंगेजमेंट पार्टनर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डायरेक्शन, supervision and performance of audit engagement in accordance with the professional standards and regulatory and legal requirements.
He is responsible for auditor's report being appropriate in circumstances. Review of audit documentation before issue of audit report is his responsibility. ठीक है. It has to be ensured that sufficient appropriate audit evidence has been obtained to support the conclusions reached for issuance of auditor's report. ठीक है. एक बार लर्न करते हैं. Responsibilities of CAR as the engagement partner in relation to overall direction and review of the audit. इसमें ऐसे कौन सा लग रहा है? ऐसे 220 quality control for an audit of financial statements. Engagement partner has the responsibility for direction, supervision and performance of audit engagement in accordance with the professional standards and regulatory and legal requirements. He is responsible for auditors being appropriate in he is responsible for auditors report being appropriate in circumstances. Review of audit documentation before issue of audit report, it is responsibility. ठीक है. It has to be review of audit documentation before issue of audit report is his responsibility. It has to be ensured that sufficient appropriate audit evidence has been obtained to support the conclusions reached for issuance of auditor's report. Okay. Engagement partner is also responsible for ensuring undertaking appropriate consultation on difficult or contentious matters by engagement team, not only within the team but also with the others at appropriate level within or outside the firm. Okay. मतलब ये सारी ड्यूटीज़ हो गई CAR की, क्योंकि CAR is the engagement partner. तो engagement partner has responsibility for direction, supervision and performance of audit engagement in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements. He is responsible for auditor's report being appropriate in circumstances. Review of audit documentation before issue of audit report is his responsibility. It is to ensure that sufficient appropriate audit evidence has been obtained to support the conclusion reached and for issuance of auditor's report. Engagement partner is also responsible for ensuring undertaking appropriate consultation on difficult or contentious matters by engagement team, not only within the team but also with the others at appropriate level within or outside the firm. Specific responsibilities relating to EQCR. EQCR की फुल फॉर्म क्या है हमारी? EQCR है हमारा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, और ये कौन से ऐसे में आता है? ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड दोज विद अदर ऑडिट एंगेजमेंट्स इफ एनी फॉर which the firm has determined that an engagement quality control review is required. The engagement partner shall determine that an engagement quality control reviewer has been appointed. ठीक है, एक engagement quality control reviewer has been appointed. इस केस में CAT है हमारा जो engagement quality control reviewer है. Discuss significant matters arising during the audit engagement, including those identified during the engagement quality control review with the engagement quality control reviewer. Not date the auditor's report until the completion of the engagement quality control review. If the differences of opinion arise within the engagement team with those consulted or where applicable between the engagement partner and the engagement quality control reviewer, the engagement team shall follow the firm's policies and procedures for dealing with and resolving differences of opinion. इस केस में CAR हमारा engagement partner है और CAT हमारा engagement quality control reviewer है. If differences of opinion arises within the engagement team with those consulted or where applicable between the engagement partner and the engagement quality control reviewer, the engagement team shall follow the firm's policies and procedures for dealing with and resolving differences of opinion. Accordingly, CAR must ensure that the audit is properly directed. उस केस में CAR की बात मानी जाएगी. Reviewed and completed, and that the auditor's report is not issued. This is the final answer. These answers are the synopsis provided by the ICAI. हमें इन synopsis के basis पे answers बनाने होते हैं, keywords जोड़ने होते हैं. Accordingly, CAR must ensure that the audit is properly directed, reviewed and completed, and that the auditor's report is not issued until the EQCR is completed and all significant matters and differences of opinion are resolved in accordance with SA 220, notwithstanding management pressure. फुल कहानी क्या थी? CAR और CAT दोनों के बीच में थोड़ा सा जो एक क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट टाइप अराइज हो गया. CAR मस्ट मैनेजमेंट प्रेशर कर रही है तो मैनेजमेंट के प्रेशर में कोई CA नहीं जाएगा. अकॉर्डिंगली CAR मस्ट एंश्योर दैट द ऑडिट इज प्रॉपर्ली डायरेक्टेड, reviewed and completed, and that the auditor's report is not issued until the EQCR, engagement quality control review, is completed and all significant matters and differences of opinion are resolved in accordance with SA 220, notwithstanding management pressure. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पता है क्या, मैंने जितना भी एनालाइज किया ना काफ़ी टाइम से, जो ऑडिट के पेपर्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्टडी मैट के बेसिस पे तो हैं, बट हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे टेक्निकल कीवर्ड्स चाहिए क्वेश्चंस में कि इस तरह वाले. ठीक है, तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग कितना भी स्टडी मैट कर लो, नोट्स कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं
जो आपके RTPs होते हैं या जो PYQs होते हैं ICI के, उनको उनके बिना मत जाना पेपर में. Mr. Praveen, an articled clerk, wants to know the applicable engagement standards in the following situations. इसमें कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? चलिए. An assignment to assist the management of Healthy Foods Limited with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining assurance on that information. फिर से. An assignment to assist the management of Healthy Foods Limited with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining assurance on that information. ठीक है. अब आते हैं an assignment to assist the management of Healthy Foods Limited with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining assurance on that information. तो इसमें कौन सा लगेगा? Standards on related services. The applicable standard is standard on related service, sorry, SRS 4410. Okay. An assignment to assist the management of Healthy Foods Limited with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining assurance on that information. Standards on related service. The applicable standard is SRS 4410 revised. Got it? चलिए. An assignment to examine the prospective financial information of Digital Future Limited. An assignment to examine prospective financial information of Digital Future Limited. Standard on assurance engagements. The applicable standard is SA 3400. देखिए, एक कीवर्ड ले लो. अगर आ रहा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो कौन सा लग रहा है? SRS 4410. ठीक है. अगर आ रहा है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव मीन्स इन द फ्यूचर, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAE 3400. तो ये दो इंपॉर्टेंट है हमारे. SRS तो इन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में ये पूछे थे, SAE 3400. ठीक है, ये दो हो गए हमारे. चलिए, नेक्स्ट इज फर्दर एक्सप्लेन to Mr. Praveen the difference between reasonable assurance engagement and limited assurance engagement. No auditor can provide you देखो, कोई भी चीज़ ऑडिट में कभी भी 100% शॉर्ट नहीं होती. ठीक है. इन्होंने हमसे पूछा डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट. रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. Reasonable assurance engagement provides high level of assurance. Limited assurance engagement provides lower level of assurance than reasonable assurance engagement. फिर से, जो reasonable assurance engagement है वो आपको provide करेगा high level of assurance. Limited assurance engagement provides lower level of assurance. Simple. ठीक है. It performs elaborate and extensive procedures to obtain sufficient appropriate evidence. It performs fewer procedures as compared to reasonable assurance engagement. तो अगर कभी भी आपसे पूछें एक क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट नीड्स अ रीजनेबल एश्योरेंस. वी कैन प्रोवाइड देम 100% शॉर्ट एश्योरेंस, विच नीड जस्ट टू गिव देम अ रीजनेबल एश्योरेंस. It performs elaborate and extensive procedures to obtain sufficient appropriate evidence. It performs fewer procedures as compared to reasonable assurance engagement. It draws reasonable conclusions on the basis of sufficient appropriate evidence. It involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw limited conclusions. But we don't need a limited, no, we need a reasonable. At least give me some reasonable thing. Examples of reasonable assurance engagement is an audit engagement. Example of limited assurance engagement is review engagement. Got it? फिर से, reasonable assurance engagement provides high level of assurance. ठीक है. It performs elaborative and extensive procedures to obtain sufficient appropriate evidence. It draws reasonable conclusions on the basis of sufficient appropriate evidence. Example of reasonable assurance engagement is an audit engagement. फिर से, limited assurance engagement provides lower level of assurance than reasonable assurance engagement. It performs fewer procedures as compared to reasonable assurance engagement. It involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw limited conclusions. Examples of limited assurance engagement is review engagement. Got it? ठीक है. तो what we need a reasonable assurance. Just a sec, पानी की बॉटल. Okay. Next one is CAZ. The auditor of Primetech Industries Limited is conducting the audit for the financial year 24-25. ठीक है. While reviewing contingent liabilities,
he identifies significant litigations and legal claims that may materially affect the financial statements. Okay. द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस एंड पॉसिबल, पहली चीज़ आप लोगों को कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ पता होनी चाहिए. कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कोई भी फ्यूचर में लाइबिलिटी जो कंपनी पे अराइज हो सकती है. ठीक है, असिग्निफिकेंट यू कैन से. द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस एंड पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दीज केसेज आर इनएडिक्वेट. ओके. And unconvincing. Okay, anticipating that the company's external legal counsel may not respond to a general letter of inquiry. Okay, CAZ decide to seek direct communication through a letter of specific inquiry requesting the legal counsel to provide information to the auditor. Okay, CAZ decide to seek direct communication through a letter of specific inquiry requesting the legal counsel to provide information to the auditor. Okay, you are requested to state the matters to include in a letter of specific inquiry as per SA 501. Further explain the auditor's responsibility. The management refuses to permit communication or meeting with the entity's external legal counsel. ठीक है, केस क्या है? CAZ जो ऑडिटर हैं प्राइम टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, उनको ना ऑडिट करना है और उन्होंने देखा कुछ कंटिजेंट लायबिलिटीज़ हैं, सिग्निफिकेंट लिटिगेशंस हैं, लीगल क्लेम्स हैं. मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस एंड पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस केसेस आर इनएडिक्वेट एंड इनकन्विंसिंग. ठीक है, मैनेजमेंट ठीक से जवाब नहीं दे रही. एंटिसिपेटिंग दैट द कंपनीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल में नॉट रिस्पॉन्ड टू अ जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी. कंपनी का जो लीगल काउंसिल वो जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. अब CAZ यहाँ चाहते हैं डिसाइड टू सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी रिक्वेस्टिंग द लीगल काउंसिल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, ऐसे टू द ऑडिटर एज पर SA 501. देखते हैं क्या कहते हैं. SA 501 कौन सा है? As per SA 501, audit evidence, specific considerations for selected items. A letter of specific inquiry includes audit evidence, specific considerations for selected items. A letter of specific inquiry includes list of litigation and claims. ठीक है, उसमें डालो. Where available, management's assessment of the outcome of each of the identified litigation and claims and its estimate of the financial implications including costs involved. And audit evidence, specific considerations for selected items. Audit evidence, this is a specific consideration for selected item. Contingent liability की बात कर रहे हैं, ऐसे 501 लगेगा. A letter of specific inquiry includes list of litigation and claims where available, management's assessment of the outcome of each of the identified litigation and claims and an estimate of the financial implications including costs involved. And a request that the entity's external legal counsel confirm the reasonable length of management's assessment and provide the auditor with further information if the list is considered by the entity's external legal counsel to be incomplete or incorrect. ठीक है, specific inquiry use करो. Audit evidence, specific considerations for selected item. A letter of specific inquiry includes list of litigation and claims where available, management's assessment of the outcome of each of the identified litigation and claims and estimate of the financial implications including costs involved. And a request that the entity's external legal counsel confirm the reasonable length of the management's assessment and provide the auditor with further information if the list is considered by the entity's external legal counsel to be incomplete or incorrect. Auditor's responsibility where management refuses permission. ठीक है, इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूजेज द टू परमिट. देखिए, समटाइम्स ऑडिटर के साथ में प्रॉब्लम हो जाती है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट ऑडिटर के पास क्या है, एक क्वालिफाई करे अपनी रिपोर्ट को. ठीक है ना, मॉडिफाई कर सकता है अपनी ओपिनियन को. और इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूजेज टू परमिट द ऑडिटर टू कम्युनिकेट और मीट विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एंड द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SA 705. परफेक्ट यहाँ तक. सिक